Little disappointed. We were expecting that since India has already started the BTA and we were among the first few countries, we will have a BTA in place before 1st of August. That has not happened. Secondly, a high duty of 25% has been imposed on India, coupled with the fact that my competitors in South Asia and Southeast Asia have a lesser duty. But at the same time, we are also looking into that this is a problem which is only for a temporary period. We expect the BTA to be culminated by fall of 2025 as decided by the two leadership. So it's a problem which is there for 2 to 3 months. Now we know that on India 25% tariff is there, a lot of orders which were on hold. I think the mathematics will start working out. We will see to what extent the Indian exporter can absorb, to what extent US importer can absorb, and in what way we can also request the government for some help. There are cost disability factor in our export which are making export less competitive. We may approach the government to address them, and probably that will provide some relief to the industry. They will continue with the business because both sides note that this is a very temporary problem, and once the BTA is in place, whatever little hit, little loss they incur at this point of time, they will be able to recover in post BTA scenario. Secondly, sir, which industry do you think will be the most affected by tariffs? I think it will depend in which industry, who is my competitor. Apparel and textile is definitely going to impact it because all my South Asian competitors, Southeast Asian competitor, with the exception of China, is having a lesser duty. So is true of footwear sector because Vietnam will have 20% duty, Indonesia 19% duty, India will be at 25% duty. High duty of 25% on gems and jewelry will be impacting the demand also and our exports also. So these are the segments which will be impacted substantially, and probably we will be having a dialogue with these industry to see in what way we can approach the government to help these sectors. And also the export in general, which was roughly 55% of India's export to the tune of around 47 to 48 billion dollar, is impacted because of the high tariff, though of course it will vary from sector to sector, and that's why probably a little detailed analysis needs to be done before we approach the government. Also, sir, so is it time to rethink, our sort of export markets and diversify, and not just depend on America? Absolutely, diversification has been a policy in the past also. The good thing is now we have the free trade agreement, and our free trade agreement are with the complementary economies who are major markets also. We have the market of Australia, UAE, European free trade countries, and now UK will be opened for India. Much of the exports may go to these markets also. If you look into the trend of export to these, they are better than my national average of exports. For example, in goods sector, we basically manage what we achieved a year before. But if you look into my export to UAE as well as to Australia, they are clocking double-digit growth, and definitely diversification will happen. Also keep in mind that we have a very vibrant domestic market also, and therefore the challenge for Indian exporter is not the challenge for Southeast Asian countries where they have to export at any cost. We have the domestic market to provide solace if there is much challenge for the industry. जैसे सर आपने बोला कि वी हैव इन इंडिया एंड आत्मनिर्भरता, सो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप इंडियन मार्केट देखिए, हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता जा रहा है, हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया में डिमांड ऐसे भी बढ़ती जा रही है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जब रेड सी की क्राइसिस हुई, उस समय हुआ कि इंडिया का सेरेमिक एक्सपोर्ट बहुत फ़र्क पड़ेगा, जाके इंडस्ट्री की क्या हाल है। हम लोगों ने खुजा एक क्लस्टर है सेरेमिक्स का, उसमें विज़िट किया, तो उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया, एक्सपोर्ट ज़रूर प्रभावित हुआ है बिकॉज वो उतना फ्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बट इंडिया में जब से ये लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए हैं और कंज्यूमर का ट्रेंड टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट हो गया है, तो उनका मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये चीज़ इंडिया को ये फ़ायदा है। हमारा का जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम डी रिस्किंग की बात करते हैं, तो हम भी कहते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट सिनेरियो अच्छा नहीं हो, यू कैन फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। जब डोमेस्टिक मार्केट नहीं है तो यू कैन फोकस ऑन एक्सपोर्ट। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम कंट्रीज़ को है। और सर जैसे जो उनका जो टैरिफ इम्पोज हुआ है दैट्स वे लेस दैन जो हमारे पे इम्पोज हुआ है,
तो does this reduce our competitiveness in the global market? कॉम्पिटिटिवनेस तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप लैंडेड प्राइस की बात करेंगे प्रोडक्ट की, बिकॉज ओवरसीज़ कस्टमर के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जिस कंट्री पे कम टैरिफ लगा है उनकी लैंडेड प्राइस कम रहेगी, एज्यूमिंग कि दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक है, तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो उनको एडवांटेज है उसको हम किस एक्सटेंट तक नलिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई हम देखेंगे कि हम एक्सपोर्टर या यूएस का इंपोर्टर किस तरह उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। बिकॉज बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कस्टमर को रिटेन करें। ये और भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम ये जानते हैं ये प्रॉब्लम है, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। टैरिफ की जो हाइक हुआ है वो लिमिटेड पीरियड के लिए हुआ है, तो अगर हम इस पीरियड को किसी तरह मैनेज कर लेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। टेम्पररी प्रॉब्लम में हम गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, गवर्नमेंट से भी कुछ हम हेल्प चाहेंगे जिससे हमारी जो कॉस्ट डिसेबिलिटी फैक्टर्स हैं वो एड्रेस हो सकें। और हम बहुत आश्वान्वित हैं कि जब इंडिया का बीटीए हो जाएगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो यूएस के साथ ऐसे भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।